Good evening, learners. Good evening, sir. Good evening. Sir, very good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Enterprise in rural areas. So here the subject matter contains arranging and managing finance. So finance aspect is one of the important concepts for every organization. Without finance, that how can an organization will run smoothly? Each and every organization in the world, small or big, require finance. Hence, it is that enterprise case require finance. The large scale industry and medium scale, small scale and cottage village industry require finance. So objective of this finance as for a rural entrepreneur, arrangement and management of finance is one of the most important aspects. This is critical for the success of your enterprise. Without finance and without its proper management, no entrepreneur can move forward for achieving the desired goals. Finance is always scarce resources. The entrepreneur should be aware of this so that would be able to arrange adequate finance for their enterprise in the rural setup. They should have the knowledge and advantage and disadvantages of various kinds of sources of finance. Hence, identify the source of finance. For arranging and managing finance, first that is, require the identifying the source of finance. Make application for properly availing the finance. Conduct financial analysis. Monitor the end of the use of funds. Be aware of different kinds of schemes prevalent in the banking sector. So this is the process of objective of finance that requires. अर्थ हूँ प्रत्येक जेकोसी ऑर्गेनाइजेशन और संगठन बिजनेस संगठन स्पेशली फाइनेंस इज इनएविटेबल so decision to be help employed, studying and scanning of business environment, selection of a project, deciding organizational structure and like preparation of a project report, provision of a registration, inquiry for machinery and technology, statutory license and clearance, arrangement of finance, application of financial assistance, power and water connection. These are the varieties of activities must be identified by the organizers. So source of funds particularly institutional and non-institutional. The former comprises the commercial banks, cooperative society, institutional finance. विभिन्न प्रकार आनुष्ठानिक अनुष्ठान गुड़िक अच्छी that is institutional finance and अनानुष्ठानिक कहले non institutional finance. So अनुष्ठानिक हिसाब रे banks, commercial bank, cooperative societies, development banks, regional rural banks and non-banking financial companies. So these institutes operate in a regulated environment and observe fixed norms and guidelines and enumerated by the government. सरकारन को द्वारा नीति नियम निर्धारण द्वारा एमाने अनुष्ठानिक institutional organization provides the financial assistance to different businessmen and traders and entrepreneurs. The non-financial institution, non-institutional agency are lending agency operating in non-formal manner. They are mostly money lenders. Non-formal manner. There is no certainty of rules and regulations in case of non-institutional agencies. So they are mostly money lenders, village money lenders and the capitalists, those who formally lends the deficit earners, those having surplus money, they sanctions
and facilitate to deficit earners by which they can invest in that particular finance in different business sectors. They were the only lending agency before the entry of institutional agency. Rural people have easy access to this source of finance as there are no fixed rules and regulation guiding their activities. These money lenders charge very high rate of interest and many of them take away the entire property of the poor people. Hence, they are belongs to exploited groups. The non-institutional agency belongs to exploited groups, to the rural people. Hence, institutional finance is very cordially, tremendously that help and cooperate to different traders and businessmen. Institutional finance are of also different categories like banking institution, non-banking banking financial companies, development bank, are the categories belongs to institutional finance. So banking institution, again, commercial bank, cooperative banks, regional banks, and the development banks are like small industrial development bank of India, जोटा कि SIDBI बोली कहा जाउची, SIDBI, Small Industrial Development Bank of India. National Bank for आउट आउची NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. And like National Housing Bank, these are the different categories of developmental banks. जोटा कि विशेष कर NABARD small categories of group of entrepreneurs is assisted to assist to small entrepreneur by NABARD. And all the above banking and non-banking and non-formal financial agency are the main source of finance for the entrepreneur. So that's why entrepreneurs depends on them because they have the deficit income, having no surplus money to invest elsewhere in the business sectors. And loan application and sanction of procedure. So तार अछि विभिन्न प्रकार किभଳି लोन आनिबो कोन करिवो केमिति इन्वेस्टमेंट करिवो इत्यादि. The entrepreneur has to submit a loan application to the bank. प्राय almost all समस्त जानि थिबो. निश्चित भाव रे गोटा प्रत्येक क्षेत्र रे application निहाती दरकार पड़ी थाए. To submit a loan application to the bank for availing finance. Standard loan application format always available in financial institution. Along with this, the loan application should also submit some other particulars like project report. Application सहित आमे को भली प्रोजेक्ट करिया पय जाउछु केते टंकार प्रोजेक्ट तार accessories कोन अछि तार फैसिलिटी ऑनलाइन फैसिलिटी कोन अछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट both projected and audited. सुनीता महाता टिके म्यूट करो साउंड होछि so that and the details of a primary and a collateral securities to be offered by the bank to the bank for getting the loans sanctioned. The bank officials appraise the loan application process and documents. If found suitable, convey their sanction to the applicant. So bank authority जदि देखिबो ठीक ठाक सब अछि collateral security अछि एवं मॉर्गेज अछि एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट ठीक ठाक अछि एवं ये जदि बिजनेस करे त से प्रॉफिटेबल होबो so that immediately the bank will sanction the amount of loan. Banks make assessment for the fund requirement of the borrower by various means. These involves a feasibility and followed by assessment of working capital and the term loan requirement. They usually see whether the raw materials for running the units are available in the local area or not. Bank सब गुडा को फोकस करिवो कोठी लेबर अवेलेबल होची कोठी से लेबर हायर करिवो कोठी रॉ मटेरियल आनिवो सब गुडा को फिजिबिलिटी की से फोकस करिवो बैंक. हां जदी देखिला सब गुडा को फिजिबिलिटी अछि लेबर इज आल्सो एन इंपोर्टेंट रिक्वायरमेंट. So सब फिजिबिलिटी अछि the bank will please to sanction the amount. Then the availability of infrastructure facilities like power, water, transportation, communication, etc. is also examined by the bank. So खाली देखिबो नै जे जने जे एप्लीकेशन दे दबो मॉर्गेज दे दबो बा कोलाटरल सिक्युरिटी दे दबो जे ताको सैंक्शन कर दियो
इम्पॉसिबल फिजिबिलिटी प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट रो से सेगड़ा सब तर्जमा करि थाए बैंक एवं दरकार पड़ले फील्ड सर्वे मध्ये इंक्वायरी हबो बैंक द्वारा ठीक ठाक सब अछि सो देन बैंक्स also look at the security aspect. This needs to safeguard to interest of the bank in case of any failure. If the security as per the norms and sanction terms bank accept and proposals, bankers then fix a rate of interest of the amount financed by them. जो अनुसार देखियो बैंक सब ठीक ठाक अछि फील्ड इंक्वायरी सर्वे हिसाला परे प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी अछि लेबर हायर अछि एवं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अछि एवं रॉ मटेरियल अवेलेबल मार्केट डिमांड अछि प्रोडक्ट जहाँ से प्रोडक्शन करबा पाए जाउची तले एगडा सब ठीक ठाक अछि से अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट पकेबो से एवं केते अमाउंट से लोन डिजायर करूची से अनुसार लोन फिक्सेशन होबे एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी सर्वे टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल टू रूरल एंटरप्रेन्योर की भलिया सब लोन सब दिया जाउची सो लाइक कैश क्रेडिट वर्किंग कैपिटल लोन कैश क्रेडिट अछि ब्रिज फाइनेंस अच्छी टर्म लोन अच्छी ये सब विभिन्न प्रकार माने क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल टू ए रूरल एंटरप्रेन्योर सो लाइक कैश क्रेडिट द लोन दिस लोन इज रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे बिजनेस ऑफ द एंटायर entity normally working capital loan is assessed and sanctioned at the time of sanction of term loan when term loan and working capital loan are financed from different financial institution, a joint appraisal is made both the financial institution. So here working capital, cash credit diya jay kete bele na they particularly focus on the working capital because we know there are two types of capital required by the entrepreneur. One the fixed capital, another is working capital. So business mu sedina je bali gote example doutili je ko guda ka fixed capital gote entrepreneur whether the entrepreneur belongs to small categories or big categories, large scale entrepreneur or small scale entrepreneur. Each entrepreneur or each businessman or producer or industrial owner having faces two categories of capital. So fixed capital derived from the fixed factors, working capital derived from the working factors. So fixed capital like land, building, heavy machine tool, top managerial activities. जोड़ा कि स्थिर fixed capital, it cannot be changed during short period. So business होची दुईटा टाइम पीरियड रे गोटा शॉर्ट पीरियड बिजनेस गोटा होची लॉन्ग पीरियड बिजनेस. So प्रत्येक क्षेत्र रे शॉर्ट पीरियड हो लॉन्ग पीरियड हो सब बेले वर्किंग कैपिटल निहाती दरकार पड़ी था. So working that is the working capital like factors, the variable factors, fixed factor and variable factors. So working capital required for the variable factors, not for the fixed factors. Fixed factor like land, building, heavy machine tool, top managerial activities. इटा होची ओवरबर्डन कॉस्ट आकु कुआ जाए, ओवरहेड कॉस्ट एगडा कुआ जाए. कारण जने एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन पूर्वरु ताकू लैंड परचेज करबा ପାଇଁ पड़िथाय बा हायर करबा ପାଇଁ पड़िथाय, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करबा ପାଇଁ पड़िथाय, तापरे हेवी मशीन टूल जदि बा दरकार हला ताकू इंस्टॉल करबा ପାଇଁ पड़िबो एवं भलो टॉप मैनेजर गोटा रखिबा ପାଇଁ पड़िबो. So that is why these are the fixed factors. So variable factors as requires working capital. Working capital is meant for day to day expenditure. दैनंदिन खर्च पाई वर्किंग कैपिटल रा दरकार पड़े. लेबर केते श्रमिक डेली दरकार पड़ुछन, केते कंचा माल दरकार पड़ुची, केते इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होची, केते सैनिटेशन दरकार होची, केते केमिकल बेवरेज दरकार पड़ुची, केते खुद्र खुद्र स्मॉल मशीन टूल केते ब्रेकडाउन होची. सो आ परे ई गुडा के सब वर्किंग कैपिटल चलंती जम खर्च जोगुडा का चलंती खर्च ओडिया रे कुआ जाए. या परे डेली बेसिस रे खर्च हबो कारण लेबर मान को वेज पेमेंट करिया पड़बो, डेली कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करिया पड़िबो एवं वाटर सैनिटेशन एगडा दरकार पड़िबो. डेली किछि मशीन टूल ब्रेकडाउन होतिबो, अच्छा किछि केमिकल डेली मध्ये खर्च होतिबो. So that's why we require working capital is
Commercial banks prefers to grant working capital facilities as to compared to term loans. The working capital requirement of the parties should be assessed properly and bank should finance that much as shall be required. Jete parimana habo bank sanction karibo working capital ପାଇଁ କାରଣ ବିଜନେସ୍ ର ପ୍ରଡକ୍ସନ ର ଫିଜିବିଲିଟି କି ଦେଖିକି working capital ଆମେ need କରିଥାଉ ବା variable factor ଆମେ need କରିଥାଉ production of feasibility status ku dekhikiri ame we demand the variable factors, so accordingly the working capital is required. So bridge finance agote ache bridge finance gap kimti dura karibo. Bridge finance is a short term finance given by commercial bank to assist the borrower for overcoming delay and disbursement of sanction term loan. मझिरे कोन करिवो जो बैंक जो लोन टा देई थाए एंटरप्रेन्योर मानकु से गैप टा जोटा दूर करिया पय गोटा ब्रिज लोन दिया जाए केते बेले से टर्म लोन पाइबो केते देरी हेई पारे एपटरे प्रोडक्शन स्टार्ट हबो ए जो गैप टा मझिरे सैंक्शन ऑफ द लोन एंड प्रोडक्शन ऑफ द आइटम गुड्स कमोडिटी ए जो गैप टा वर्किंग कैपिटल निहाती दरकार. So bridge finance, that is bridge finance can adjust the crisis and sort out the crisis. The bridge loan is paid back directly from the proceeds of the term loan to be disbursed. तापर आगोटा होची टर्म लोन दीर्घ समय बा दीर्घ वर्ष पर्यंत जो लोन टा दिया जाए for long period. This loan is required to adequate to acquire fixed asset. जोटा fixed factors fixed assets एगुड़ा कहे. So fixed factor हमें जानिले like land, building, heavy machine tool, top managerial activity. ये factor गुड़ा का विशेष करी knowledge और सब रखी थी वो. प्रत्येक entrepreneurial activity रे factor गुड़ा का नियति दरकार. दुईटा factor सब था है. Fixed factor, variable factor. आगोटा ये अवश्य थी semi variable factor. It is not required for you. Semi variable factor कोइले that partly fixed, partly variable factor तक आ जाए. Partly fixed, partly variable. Like electricity, telephone bill, एगड़ा होती semi variable cost factor जाए. कारण एटा होती fixed हबो नहीं कि variable हबो नहीं. उड़ा in between fixed factor and variable factor, that is semi variable factor को आ जाए. So term loan होती this loan is required to acquire fixed asset. This is meant for land, building, heavy machine tool, machinery, furniture and fixtures, vehicles, and movable fixed assets, बड़ा बड़ा heavy electrical fittings, सब बड़ा कथा को बुझौछि. यार ऊपर जो लोन टा दिया जाए ताको आ जाए टर्म लोन. Normally bank or financial institution take some time for processing and sanction term loan. बैंक एठी टर्म लोन दबो माने किछि टाइम पीरियड नबो. तो टाइम पीरियड नेले त भलो एसेट गुडा को वैल्यूएशन हबो तो बहुत दिन से अछि. तो तापर सेटा सैंक्शन देई थाए. सो फिक्स्ड factor and a variable factor that provide ample opportunities to the entrepreneur. तापरे assessment किमत करा जाए working capital requirement रा assessment for the entrepreneurial activity. Working capital is the capital required by an enterprise to carry out its day-to-day operation. दैनंदिन जो कार्यक्रम पाई working capital दरकार पड़ी था. In banking language, to complete a working cycle ताको कहा जाए operating cycle. Operating cycle होती working capital ला requirements को बुझाए. So banking term अनुसार that is known as the operating cycle. वो बड़ी ऑपरेट होती कौन वर्किंग कैपिटल दरकार पड़ुछि. सो बैंक हिसाब रे जने एंटरप्रेन्योर हिसाब रे ताको आला जे वर्किंग कैपिटल द बैंक हिसाब रे ताको ऑपरेटिंग साइकिल बोली कहा जाउछि. सो वर्किंग कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड द चेंजिंग ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल. सर्कुलेटिंग कैपिटल मध्ये कहा जाए वर्किंग कैपिटल. सर्कुलेट होतिबो आसुथिबो वर्किंग कैपिटल एवं कोऑपरेशन करथिबो प्रोडक्शन सहित पुनी फिनिश्ड हो जाउथिबो. Since the money circulation in various forms of asset in a continued manner at one time, the funds may be tied up the raw materials which is then converted into finished products, and
when these are sold, it is either in the form of receivable or cash substituting finished goods. In the balance sheet, the working capital is reflected by those items of asset and liabilities. So balance sheet re eta reflect heithae asset and liability upare working capital. The excess of current assets over current liabilities is called the net working capital or the liquid surplus. जोटा बड़ी पड़ी था तक पढ़ जाए net working capital बोली कहा जाए asset liability अनुसार. So it is a common fact that banks seldom finance the total working capital requirements. Some part of the working capital has to come from the unit of internal surplus and the rest is financed by the banks against the security inventory and debtors. So working capital हिसाब रे निजे एंटरप्रेन्योर किछि इन्वेस्टमेंट करि थाय तार ओन फंड रु आउ जहा दरकार पड़ला से मैक्सिमम पॉसिबल बैंक फाइनेंस is given to the investor or the entrepreneur. So assessment of the term loan. केमित सब assessment हुए feasibility study. Feasibility study, while sanctioning the term loan, the detailed analysis is made by the way managerial competence, technical feasibility, commercial viability, financial viability. यहाँ पर term loan गुड़ा को sanction है था. Important aspect of the entrepreneurial activities in this sanctioning the term loan. So therefore, a thorough study needs to be made on the capability of the entrepreneurs in implementing and managing the project, examining some points, past experience, qualification, entrepreneurs of the corporate, technical and managerial skill, responsibility, entrepreneurial skills, ambition, risk taking aptitude. बैंक खाली दे दिए ना जी एंटरप्रेन्योर रिस्क नहीं था बैंक मध्य ताको ऑब्जर्व करी था तार साइकोलॉजी तार फिजिबिलिटी तार एटीट्यूड तार नॉलेज तार स्किल कॉम्पिटेंसी कैरेक्टर ऑनेस्टी इंटेग्रिटी माने सचोटता ऊपर सब गुडा को बैंक सब देई थाए कारण बैंक जो लाख ऑफ रुपीस सैंक्शन करिवो बा क्रोर्स ऑफ रुपीस सैंक्शन करिवो बैंक खाली मन को दे देबनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एगडा सब नजर करिवो सो एगडा होची कॉम्पिटेंसी रे जाउची तो टेक्निकल फिजिबिलिटी से बोली टेक्निकल फिजिबिलिटी कोन दरकार पड़िबो स्टडी ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट रिलेवेंट फॉर प्रोडक्शन फिनिश्ड गुड्स ऑफ प्रॉपर क्वालिटी पॉइंट्स टू बी स्टडीड लाइक लाइसेंस परमिट required to start the project and their availability, locations of the projects, availability of raw materials, power, water, steam, fuel and transportation, plant and machinery upare, product and processing upare, raw materials and labor availability upare, ये सब technical feasibility को focus करिवो term loan sanction by. So thirdly, commercial viability, the present and the futuristic trends of demand of the products. जो प्रोडक्ट का करूची बा जो आउटपुट टा करिवो फिनिश्ड प्रोडक्ट करिवो प्रेजेंट डिमांड कोन अछि आगु को केते डिमांड हबो बा ये बिजनेस टा ग्रो करिवो कि ना नाही ता पर मध्य फोकस करिवो. सो लेवल ऑफ कंपटीशन फ्रॉम सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स कारण गोटाई प्रोडक्ट रो बाजार रे वेराइटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर आर देयर. फॉर एग्जांपल गोटे लक्स साबुन प्रोडक्शन करिवो जने कंपनी से बळे लिरिल अछि से रेक्सोना अछि वेराइटीज ऑफ 10 टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर कंपटीटर आर देयर. मोबाइल फोन जन प्रोडक्शन करूची मोबाइल वेराइटीज ऑफ कंपनी आर देयर. कैमरा प्रोडक्शन होची कैमरा रे वेराइटीज ऑफ कंपनी आर देयर. जस्ट क्वालिटी रे डिफरेंस रहउची प्रत्येक प्रोडक्ट रो. सो फूड ग्रेन से मध्य फूड आइटम्स जो प्रोडक्शन होची तार मध्य से बळी वेराइटी ऑफ प्रोड्यूसर आर देयर एंटरप्रेन्योर आर देयर. प्रत्येक प्रोडक्ट रो अनेक कंपटीटर अछंती तो तापरे मध्य फोकस करिवो. सो द प्रेजेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट एगरा सब कमर्शियल वायबिलिटी. सो बिजनेस केते दूर स्टेबल हबो ये कमर्शियल वायबिलिटी ऊपर मध्य अनेक डिपेंड करूची. फाइनेंशियल वायबिलिटी तापरे
So viability, whether sufficient finance is available at a present at a reasonable cost to execute the project, whether sufficient profit would be available to service the creditors and shareholders, whether sufficient funds or cash will be available to repay term loan, whether break-even point or margin of safety are satisfactory or not. Margin of safety का होची very important प्रत्येक business रा. So सेटा कहते हैं break-even point. So break-even point analysis गोटे अच्छी short notes वासे what is the break-even point analysis. So break-even point analysis गोटे diagram अच्छी mathematical derivation अच्छी केते कथा अच्छी. It is just तमने खाली formula एवं तार analysis बाबत जानिबो. What is break-even point analysis? मार्क कर प्रत्येक प्रोडक्शन क्षेत्र रे ब्रेक-इवन पॉइंट एनालिसिस इज वेरी बीईपी ताको शॉर्ट फॉर्म रे कहा जाए बीईपी एनालिसिस बीईपी एनालिसिस बा ब्रेक-इवन पॉइंट एनालिसिस. सो व्हाट इज ब्रेक-इवन पॉइंट एनालिसिस? ब्रेक-इवन पॉइंट मींस दैट इज ऑप्टिमम पोजीशंस. भलो भाबे क्लियरली बुझो इटी शॉर्ट क्वेश्चन है ब्रेक-इवन पॉइंट analysis. What is break-even point analysis? So break-even point होची that प्रत्येक कंपनी large scale हो small scale हो cottage industry हो, each entrepreneur producer always faces the break-even point. The diagram टिकी clarification अच्छी. So cost and revenue factor को नेइकिरी खर्च एवं आय फैक्टर को नेइकिरी break-even point टा बाहरी थाए बा determine होता है. Cost factor और revenue factor. So प्रथमे आमे जानिले fixed factor अच्छी variable factor अच्छी. So accordingly fixed cost एवं variable cost is borne by the entrepreneur. प्रत्येक उद्योक्ता दुईटा फैक्टर को लेके से उत्पादन करिवो प्रोडक्शन करिवो. गोटा होची fixed factor गोटा होता variable factor बा circulating capital बा ताको आमे वर्किंग कैपिटल कहउछंती हम पाठ अनुसार. सो फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर बोथ ताको ऐड करा जाए हला. सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एंड व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू? प्रथमे फिक्स्ड कॉस्ट इज मस्ट बोर्न बाय द प्रोड्यूसर बिफोर आउटपुट. अरे जने उत्पादन प्रोडक्शन करिवो factor inputs converted into output. Raw materials को हमें convert करिबा output पाइबा. जेभली फॉर एग्जांपल खनि खादान रे आयरन बड़ इंडस्ट्री कथा हम कहूची. खनि खादान रे आयरन पड़ी की रहिची. इट हैज नो यूटिलिटी. से जो आयरन गडा पड़ी की रहिची तार व्यवहारिक उपयोगिता कोन अछि किछि नाही. सो इफ आयरन will extracted from the underground and open cast mines, iron will be converted into pig iron. केतेटा प्रोडक्शन प्रोसेस रे कंप्लीट होजी देखो. आयरन or converted into pig iron. Pig iron converted into steel. Steel again converted into machine tool. This is the production process. That means we can say factor input converted into output. उत्पादक ओडिया कह जाए उत्पादक उत्पादन रे परिणत होई थाए. So how break-even point is faced by the producer? So break-even point is that neither profit nor loss is incurred by the producer or entrepreneur. Break-even point is identified at that point where there is neither profit nor loss. Is known as break-even point. One optimum balance point तक कहा जाए. प्रॉफिट नाही कि लॉस नाही. कारण प्रथमे जने प्रोड्यूसर एंटरप्रेन्योर फिक्स्ड कॉस्ट आ मुंड रे बुझ थाए. कारण से लैंड किनिची बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करिची जने मैनेजर को अपॉइंटमेंट देची मेशिन टूल बसई सारलानी एगटा होची फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाए. प्रोडक्शन पूर्व ये एतक ता मुंड रे होची टेंशन रिस्की. तापरे when the producer add more and more of the variable factors to the fixed factor, so production will start. Variable factor कहले लेबर आसिले fixed factor हमर रेडी अछि
लैंड अच्छी बिल्डिंग हो जाइए मेसीन टूल बसी जाइए जड़े भल मैनेजर अपॉइंटमेंट पाई जाइए एवं तापर प्रोडक्शन स्टार्ट हम केमिति रॉ मटेरियल जोगेबा तापरे लेबर मान को ऐड करवा वाटर यूज हम एनर्जी यूज हम अन्य केमिकल व्यवहार हम तापर प्रोडक्शन चल स्टार्ट होला प्रोडक्शन सो फिक्स्ड कॉस्ट स्लोली डिक्लाइन जोड़ा के हेवी बर्डन होइथिबो 5 लाख हो 10 लाख हो छोट छोट बिजनेस क्षेत्र रे धीरे धीरे फिक्स्ड कॉस्ट विल डिक्लाइन because production start when you add more and more of the variable factor with the fixed factor production will start so fixed factor will diminish slowly धीरे 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 fixed cost टा कमी कमी आसीबो so कोन हबो fixed cost कमी हो माने revenue will increase revenue will start to earn more and more because output started production one start hala matre that means output increases that means in revenue come to the pocket of the entrepreneur thare production start hala matre revenue will come to the pocket so sei kshetra re kon hobo revenue line ta increase karibo revenue line bodi bodi jibo ebong variable cost ta madhya badibo variable cost jette add hobo fixed factor सहित फिक्स्ड फैक्टर सहित वेरिएबल फैक्टर जेते ऐड हबो रेवेन्यू सेते बढ़िबो एवं फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट बढ़िबो नो डाउट लेबर खर्च बढ़िबो रॉ मटेरियल्स बढ़िबो खर्च एवं कच्चा माल खर्च बढ़िबो जेते वेरिएबल कॉस्ट टा बढ़िबो सेते रेवेन्यू आसीबो वेरिएबल कॉस्ट टा बढ़ुछ माने वेरिएबल फैक्टर्स रिक्वायर्ड मोर एंड मोर बिकॉज़ आउटपुट प्रोडक्शन स्पीडीली increases प्रोडक्शन जोर होथिबारु हमर अधिका लेबर दरकार पड़ुची अधिका कच्चा माल दरकार पड़ुची जदि वेरिएबल फैक्टर माने दरकार रिक्वायर्ड हेउ नथिबो ताले दैट मींस देयर इज हेवी लॉस फॉर द बिजनेसमैन फॉर द एंटरप्रेन्योर सो जिते वेरिएबल फैक्टर ऐड हबो सेते रेवेन्यू बढ़िबो सो उभय बढ़िबो मार्कर उभय बढ़िबो एटा धर वेरिएबल कॉस्ट लाइन एटा धर मन करा जो रेवेन्यू लाइन बोथ बड़ी बड़ी की जिवे बढ़िबो गोटे जगह रे मिली जिवे रेवेन्यू लाइन एवं कॉस्ट लाइन विल क्रॉस ईच अदर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट सो जो जगह रे से माने क्रॉस इंटरसेक्ट करथिबे दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट सेटा को जाय ब्रेक इवन पॉइंट बोली को जाय सो ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट where there is neither profit nor loss only balance point so तापरे केवल रेवेन्यू बढ़ी बढ़ी चलिबो the gap between cost and revenue will expand हबो रेवेन्यू स्पीडली बढ़िबो कॉस्ट धीरे धीरे कमी कमी आसीबो सो प्रॉफिट विल जते गैप बढ़िबो रेवेन्यू कॉस्ट भितरे सेते प्रॉफिट आसीबो एंटरप्रेन्योर बुझि परल कि अभिमनु बुझि परल हां यस सर सो ब्रेक इवन पॉइंट कोन ताले हेलो where there is no profit no loss exactly Arpita Das break even point is that point where there is neither profit nor loss only optimum position balance position so तापर जते प्रोडक्शन बढ़िबो only yes sir revenue will accrue to the producer प्रचुर परिमाण रे लाभ खाली आसीबो बुझेला so break even point or BP the stage at which the amount of sales that the unit makes bring to no profit or no loss for the firm in other words it is the level of sales at which the sales revenue is equal to the cost of the units of sold so classification of cost fixed cost variable cost contribution so calculation of a break even point तमरा एथरे अछि किमेदि कैलकुलेशन होए मैथमेटिकल गोटा इक्वेशन अछि बीपी और ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हला फार्मूला अछि सिंपल फार्मूला कि असुविधा नै इक्वेशन ब्रेक इवन पॉइंट तक शॉर्ट फॉर्म को जाय बीपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और आउट के तक सॉल्व करले
fixed cost divided by sales price per unit minus variable cost per unit. जोटा कंट्रीब्यूशन को आउ टिके हमें सॉल्व कर देले सेटा पाइबा सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. सो बीप इन रुपीज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई टोटल सेल्स इन रुपीज. एबला गोटे इक्वेशन अछि ताको देखिबो. सो ब्रेक इवन पॉइंट बुझि पेला ना नाही ब्रेक इवन एनालिसिस. हेलो Yes, sir. अर्पिता क्लियर हलो. Yes, sir. ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस देखो ब्रेक इवन पॉइंट कॉस्ट रा हम दी प्रकार रहला कॉस्ट कोडा फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट बुझि पेलो ना नाही. जदि प्रोडक्शन Sir, जदि प्रोडक्शन बढ़ी बढ़ी चलला कार कॉस्ट टा कमी कमी जीवो फिक्स्ड कॉस्ट ना वेरिएबल कॉस्ट टा sir, variable. केमती. अरे ना ना फिक्स्ड fixed cost. कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट जिते प्रोडक्शन बढ़िबो प्रथमे एंटरप्रेन्योर कोन करिछि तार फिक्स्ड कॉस्ट बोर्न करिछि रिस्क नै जाइछि बिफोर प्रोडक्शन. अभी उनटे बुझ भलो आबे बिफोर एनी आउटपुट अभिमनु कोन करिवो लैंड किनिबो. तमे गोटे एंटरप्रेन्योर करू एंटरप्राइज करछो सपोज प्रथमे तमे कोन करे पातो पार लैंड नै बिल्डिंग नै बुझ पेलो ना नै लैंड किनिलो जमी मालिक ठारू तापरे तापरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करलो ना ओपन पेंडाल करिवो स्काई तळे करिवो आकाश तळे करिवो कि ना सर बिल्डिंग बने बस जहां जहां मशीन टूल दरकार मशीन ता बसैलो. Yes, sir. अच्छा एगोडा का तमरा आगुरु हातुरु खर्च करिया पड़िबो ना नै. हां आगरु बस एगोडा का कहला ओवरहेड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट एगोडा बा ओवरहेड मुंडो व्यथा कॉस्ट नो कि. Yes, sir. मु एते टका खर्च कर देछि मो मुंडरे बोझ रहले नै कि ओवरहेड रहले नै कि. Sir. तापर आमे कोन करिबा किमिति प्रोडक्शन स्टार्ट करिबा. प्रोडक्शन स्टार्ट हेले जाय कि आउटपुट हेले आमे जाय कि ताको सेल्स करिया बाजार रे सेल्स करी आमे इनकम करिबा रेवेन्यू पाइबा. तापर आमे कोन करिबा वेरिएबल फैक्टर ऐड करिबा. वेरिएबल फैक्टर कहले को गुडा को Sir, labor. रॉ मटेरियल्स एनर्जी वाटर सैनिटेशन केमिकल जब दरकार पड़ो केमिकल दरकार पड़ो जेते जहा दरकार पड़ो. सो वेरिएबल फैक्टर जिते बढ़ी बढ़ी चली वेरिएबल कॉस्ट जिते बढ़ी बढ़ी चलीबो ता माने तम प्रोडक्शन प्रचुर होउची ता माने रेवेन्यू सते बढ़ी बढ़ी चलीबो. किंतु अपर पक्ष रे तमर फिक्स्ड कॉस्ट ता डिमिनिश करी करी आसीबो. और पिता जोटा कहला हां सर फिक्स्ड कॉस्ट कमी कमी आसीबो. बुझि पाइला ना नाही. आज्ञा आज्ञा लैंड बिल्डिंग हेवी मशीन टूल ले जो खर्च गडा करथबा जते बेले हमर प्रोडक्शन हला आउटपुट बाहरला तापर आमे तो सेल्स करिबा ना नाही बिक्री करिबा ना नाही. हां हां बिक्री करले प्रॉफिट आसिला रेवेन्यू आसिला. प्रथमे कोन होबो प्रथमे गोटा कॉस्ट सहित रेवेन्यू टा गोटा जगह रे क्रॉस करिवे तो जो जगह रे टच करले सेही मझी पॉइंट टा होची हमर ब्रेक इवन पॉइंट. जोठी की जो पॉइंट रे नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस कॉस्ट रेवेन्यू से तो इक्वल हबो ना नाही बेले 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 समय समय. Yes, sir. Yes. हां सर इक्वल सेही पॉइंट टा होची दैट इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट. तापरे जेते बेले आउटपुट बढ़ी बढ़ी चलीला सो रेवेन्यू कम टू द पॉकेट. The gap between cost and revenue will become more and more. Gap body body chalibo revenue and cost bhitere. So that profit will come more and more. So next is security margin and rate of interest. एगडा सब प्राइमरी सिक्योरिटी कोलाटरल सिक्योरिटी एगडा सब हमर अछि. So rate of interest बुझिला. So these are the items. एटा को मन रखिबो एटा होची मेन दिन से जो ब्रेक इवन एनालिसिस ता हमर जोटा रहउची आदर गोटा फार्मूला अछि से फार्मूला ता मन रखिबो बीईपी इज इक्वल टू
फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गोटे यूनिट पिछा केते आमे कंट्रीब्यूशन करिसेंती एवं फिक्स्ड कॉस्ट रो रेशियोटा ताको आजे ब्रेक इवन पॉइंट सब बेले मन रखिबो ब्रेक इवन पॉइंट को एनालिसिस करिया पई फैक्टर को नबो मु एग्जांपल आगोटा दउची देखो आगुरु देथिली एग्जांपलटा शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन प्रोसेस शॉर्ट पीरियड कहले 6 मासे वर्षे 8 मासे एई टाइप रे प्रोडक्शन जोड़ा को हुए मु कहिथिली दी सॉफ्ट ड्रिंक कोटा एग्जांपल पूर्व क्लास रे मु कहिथिली ड्यूरिंग समर सीजन मन रख एटा जानि परिबो ड्यूरिंग समर सीजन देयर इज हेवी डिमांड ऑन दी सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स ताले बाजार रे को भलिया वेराइटी रो सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल होउची केते प्रकार एंटरप्रेन्योर अछंती कोका कोला गोटे एंटरप्रेन्योर मालिक हला खोरदार आम ओडिसा रे खोरदार अछि कोका कोला कंपनी हला थम्स अप गोटा मालिक तापरे हमर रहला कोटा सेटा पेप्सी गोटा रहला पेप्सी टा होची पेप्सी कोडी प्रोडक्शन होची जानि छ ना अभिमनु अर्पिता नहीं सर नहीं सर कटकर जगतपुर रे प्रोडक्शन होची पेप्सी हला पेप्सी पेप्सी कोला जोटा कहती मार्केट रे देखिछ ना नाही सब सर देखिछु खाइछु अच्छा पीथबो निश्चय अच्छा Sure. तार सब प्रत्येक कंपनी रो विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट अछि पेप्सी रो ए जो मैंगो प्रोडक्ट गडा अछि मैंगो जूस हला पेप्सी होची मेन प्रोडक्ट तार मैंगो अछि तार अन्य प्रोडक्ट माने कोन ऑरेंज रो फ्लेवर रो अछि विभिन्न फ्लेवर रो अछि सब सो ड्यूरिंग समर सीजन देयर इज हेवी डिमांड ऑन दी सॉफ्ट ड्रिंक्स इन द मार्केट जदि प्रबल ग्रीष्म हैला ताले सॉफ्ट ड्रिंक्स बा मृदु पानी ऊपर सब लोक प्रबल इच्छा हो पीवा पई मन पका खरा दिन अवस्था रास्ता घाट अवस्था मन कर तुम दूर को जाइछ कोठु ठीक मृदु पानी मिली जीवो जते दाम नौ बरंग आमे पैसा देकी पीवा त तंटे सुखी जाउची सो when there is heavy heat wave prevails during summer season there is heavy demand on the soft drinks अच्छा एंटरप्रेन्योर सॉफ्ट ड्रिंक रो से केते समय से व्यवहार करि परिबो चर्चिता हेलो चर्चिता यस सर केते समय से व्यवहार करि परिबो मैक्सिमम सर जदि बाजार रे टिकी दिन सेल हबो सेति दिन भूल सर मैक्सिमम सर 6 मंथ 24 आवर्स बुझी पारुना मु कहली मु कहूची तुमको क्वेश्चन होची जे जणे प्रतिदिन हेवी डिमांड बाजार रहउची सॉफ्ट ड्रिंक्स जणे एंटरप्रेन्योर से मैक्सिमम गोटाई दिन रे केते समय व्यवहार कर परिबो ये सर 24 आवर हेवी डिमांड है दिन 24 आवर हां दिन राती पूरा चलेबो राती दिन सब बेले प्लांट चलेला ना नहीं प्लांट यस सर in order to meet the market demand 24 घंटा बाद आउ तो समय नहीं तेणु 24 घंटा पर्यंत से अधिका अधिका लेबर लागिबो अधिका श्रमिक व्यवहार करिवो अधिका केमिकल व्यवहार करिवो अधिका वाटर सैनिटेशन व्यवहार करिवो अधिका एनर्जी खर्च हबो ना नहीं यस सर सो एगडा सब दरकार पड़ी एगडा को फैक्टर ताले फिक्स फैक्टर को फैक्टर हैं सर फिक्स फैक्टर एगडा वेरिएबल फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर बा रहिला तमरो को गुडा को लैंड Sorry, sir, बिल्डिंग हेवी variable. टॉप मैनेजर एति के होची फिक्स्ड फैक्टर सब बेले मु बारंबार कहूनी कि दुई प्रकार फैक्टर अछि गोटा होची फिक्स्ड फैक्टर गोटा वेरिएबल फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर रेफर्स टू लैंड टा स्थिर ना नहीं यस सर यस थरे लैंड किनले आमे 6 मासे वर्ष पई आमे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कले एवं प्रति वर्ष चलला एटा शॉर्ट पीरियड बिजनेस एगडा को
खरा दिन पई केवल सॉफ्ट ड्रिंक हेवी डिमांड होची तेणु केवल खरा 4 मास पई तेणु फिक्स्ड फैक्टर रिमेन फिक्स्ड if there will be heavy demand on the product, so the entrepreneur will add more and more of the variable factor अधिक अधिक परिवर्तनीय variable factor माने परिवर्तनीय उत्पादक जोग करिवो का सहित फिक्स्ड फैक्टर सहित को गुडा को परिवर्तनीय उत्पादक ताले लेबर एनर्जी वाटर सैनिटेशन केमिकल एंड फाइनेंस यही गुडा को अधिक अधिक ऐड करिवो सो जते बेले अधिक अधिक प्रोडक्शन चलिवो ऑटोमेटिकली सो प्रोडक्शन चलिवो माने रेवेन्यू विल कम टू द पॉकेट सो ड्यूरिंग समर सीजन इफ देयर विल बी हेवी हीट वेव प्रिवाइल सो प्रचुर लाभ आसीबो गोटे एंटरप्रेन्योर पाइबो प्रचुर लाभ आसीबो जदि खरा दिने वर्षा हे गला कंटीन्यूअस रेन वर्षा लागि रहिला सर लॉस खाइबो सो लॉस खाइबो माने कोन के तो डिमांड करिवेनी सॉफ्ट ड्रिंक को ठंडा कोहला पाग लागि रहिला के काई पीबो सॉफ्ट ड्रिंक्स सो ड्यूरिंग समर सीजन the entrepreneur may earn supernormal profit or may face loss प्रचुर सुपरनॉर्मल प्रॉफिट माने प्रचुर लाभ होई पारे प्रचुर लॉस होई जाय पारे डिपेंड्स ऑन दी मार्केट एनवायरनमेंट बाजार परिवेश परिस्थिति नेगिरी ता ऊपर निर्भर करि थाए जदि खरा दिने प्रबल खरा हैला ग्रीष्म प्रवाह हैला ताले लोक प्रचुर पीबे सॉफ्ट ड्रिंक सो ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस करी प्रचुर लाभ आसीबो बुझी पारलो चर्चिता यस सर ताले फिक्स्ड फैक्टर को गुडा को अर्पिता को गुडा को लैंड बिल्डिंग एमती फिक्स्ड जिंस गुडा हेवी मशीन टूल सर हेवी मशीन टूल आ टॉप मैनेजर विभिन्न प्रकार थांती चीफ मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर सेल्स मैनेजर स्टोर मैनेजर ताथे जे चीफ मैनेजर होची से होची फिक्स्ड फैक्टर सब मैनेजर हे परिबे नै सो एगरा सब फिक्स्ड फैक्टर सो वेरिएबल फैक्टर आउ जते जा रहिला सब हला वाटर सैनिटेशन लेबर फाइनेंस एनर्जी केमिकल बेवरेज आउ सब जहा दरकार डेली बेसिस रे जहा दरकार पला प्रोडक्शन पाई एबे क्लियर हला ना आउ कोटा बुझाई देबी यस सर क्लियर हो यस सर यस अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट को जगह रे टच करूची एवं ब्रेक इवन पॉइंट कहा को कोंती जानलो यस सर अच्छा अर्पिता कहलो व्हाट डू बाय ब्रेक इवन पॉइंट So where there is no profit, no loss. A point where there is neither profit nor loss incurred by the entrepreneur. At that point, cost is equal with the revenue. खर्च सहित रेवेन्यू टा से जगह समान हेबे ए देखो मु दीटा अंगुठी एटी क्रॉस करछि ना नहीं देखो यस सर अच्छा एइटा माने करा जाऊ रेवेन्यू लाइन एटा रेवेन्यू लाइन एइटा हला कॉस्ट लाइन उभय को क्रॉस करले ना नहीं Yes sir. यस सर यस सर अच्छा एई जो पॉइंट रे क्रॉस होई चंदी रेवेन्यू कॉस्ट ता इक्वल रहला ना नहीं रेवेन्यू जहा कॉस्ट से या बुझ पाइला ना नहीं सही पॉइंट ना हला जे नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस ता माने कॉस्ट इज इक्वल विथ द रेवेन्यू ए जो टेंजेंसी पॉइंट ए जो पॉइंट रे क्रॉस करले उभय हला ता परे ए जो गैप गडा कर रहिला आडु को खाली रेवेन्यू प्रचुर परिमाण रे आसीबो बुझि पाइलो यस so at the break even point profit is equal with the cost or revenue is equal with the cost
ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି at the break even point ଯୋଉଠାରେ କି ଲାଭ ନଥାଏ କି କ୍ଷତି ନଥାଏ, ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ସେ ଜାଗାରେ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଷ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ, ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଆୟଟା ସମାନ ହେଇଥାଏ, ବାଲାନ୍ସ ହେଇଥାଏ ସେ ପଏଣ୍ଟରେ, ହେଲା, ବାଲାନ୍ସ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଉଭୟ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେ ରେଭିନ୍ୟୁ ୱିଲ୍ କମ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ବିକଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, we add more and more of the variable factor to the fixed factor, so that the entrepreneur will earn more and more profit only or revenue. So time indication ହେଇଗଲାନି, that's all today in main counseling part. ଆଉ କଣ ବୁଝିବାର ଅଛି କୁହ? ହ୍ୟାଲୋ Yes, sir. Sir, ଆଜି clear ନବୀନ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲ? ସବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ନବୀନ କୁମାର, ନବୀନ କୁମାର, ହ୍ୟାଲୋ ନବୀନ କୁମାର ବୁଝିଲ? ସାଗରିକା? Yes, sir. ଆଚ୍ଛା, ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ବୁଝିଲ? Yes, sir. କଣ ବ୍ରେକ୍ ଇଭେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କଣ କାହା କୁହାଯାଏ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ବ୍ରେକ୍ ଇଭେନ୍ ପଏଣ୍ଟ? Nor profit nor loss. Neither profit nor loss. Neither Yes, sir. profit nor loss. That means cost is equal with the revenue. Yes, sir. Break-even point is that point where cost is equal with the revenue. That means neither profit nor loss. ଲାଭ ନାହିଁ କି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଆୟଟା ସମାନ ହେଇଗଲା, ସେଠି ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା। Yes, sir. ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? सर ହଁ କୁହ। सर कौन कहूଥିଲି सर ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଫର୍ମୁଲାଟା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚେନରେ ଆସେ ସେଟା ହଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା? ହଁ ଫର୍ମୁଲାଟା ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଖାଲି ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଇଭାଲୁଏଟର ଜାଣିବ ଯେ ପିଲାଟା ପଢିଛି ଠିକରେ। ଆଜ୍ଞା ସିମ୍ପଲି ଖାଲି ଇକ୍ୱେସନଟା ବିପି ठीक ବିପି is equal with the fixed cost divided by contribution. ओके BP हाँ सर বা break even point is equal with the fixed cost divided by contribution. ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିବ। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଇକ୍ୱେସନଟା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଗରେ, सर କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। Sir. ମନେ ରଖିଦିଅ, ଏବେ Hello, ବି sir. ମନେ ରଖିଦିଅ, ବ୍ରେକ୍ ଇଭେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ବା ବିପି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ୱିଥ୍ ଦି ଫିକ୍ସଡ କଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ। ଏତିକି ହେଲା हाँ सर ଇକ୍ୱେସନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା सर Sir, I have a question. ହଁ ସାଗରିକା କୁହ। Sir, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାପିଟାଲ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାପିଟାଲ ନାହିଁ କି ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ ଆଣିବି, ତ ମତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ, ମୁଁ ବି କିଛି ଜବ କରିନି, ତ ମତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଲୋନ ଦବନି, ତ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ବିଜନେସ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି? ଜବ୍ ମୋର ଉପରେ ଦିଏ ନିଜର ନା, କିଛି ହଁ ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ନିଜର କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରପର୍ଟି କିଛି ନାହିଁ। ନା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଅଛି। ସେଥିରେ ତ ସେମାନେ ତ ମାନେ ସେଥିରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋନ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ କି ମୁଁ ବିଜନେସ କରିବି, ମତେ କିଛି ଲୋନ ଦରକାର, ସେମାନେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ମର୍ଟଗେଜ ଦିଅ, ଆମେ ବିନା ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ତମକୁ କେମିତି ଲୋନ ଦବୁ। ମୁଁ ଯେତେ 50,000 ହଉ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷେ ହଉ, ହଁ କମ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆଣିଲେ ବି, ନା ତ ନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତ କିଛି ନାହିଁ। ଅଛି ଅଛି ତା ବାଟ ଦେଇଗଲେ ହବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆସେଟ। ମୋର ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆସେଟ। ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ତାକୁ ମର୍ଟଗେଜ ଦେଇକିରି, ହିସାବରେ ରଖିହବ? ନା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ରୋଜଗାର ଯୋଜନାରେ 100% ତମେ ପାଇପାରିବ ଲୋନ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ପଢା ହେଲା, କାଉନସେଲିଂ ହେଲା, ଡିଆଇସି କି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଅ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ନା। ତମର କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିଆଇସି ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ। ଆଜ୍ଞା ଡିଆଇସି
तापर तमे आइडिया पाइबो नचेत डीआरडीए जाओ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जोटा अछि हला आज्ञा आज्ञा डीआरडीए को जाई परिबो धीरे धीरे ताको टिके परिश्रम हम तो इंडियन माने ब्यूरोक्रेट सिस्टम आमे जानि छथि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आमे जानि छथि बहुत टेबल फाइल चाष एठी गोटा काम करबा भारी टू डिफिकल्ट टास्क सर It is बैंक true. मैनेजर तो डायरेक्ट मना कर देले ना तमे किछि मॉर्गेज दे परिबो मान दे परिबोनी तो तुमको लोन भी मिलिबोनी बैंक काहे कि दबो बैंक तुमको अन्य सरकारी संस्था आइडेंटिफाई करिवो आज्ञा सेति पे डीआईसी अछि सेति पे डीआरडी अछि तो डीआईसी रे जाई कि कोन हमको रजिस्ट्रेशन करिया को पड़िबो ना तांको ना सम्मान ना लोन ना देबो तमे आगे ता पाखरे डिस्कशन करो मु गोटे चाहूची गाँ रे बहुत प्रकार फैसिलिटी अछि किंतु आमे अवेल करि परना दिनी आमे आज्ञा अवेल करि परना दिनी डीआरडी हो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी हो जोटा जिला परिषद कहंती सेठी आज्ञा एवं आमे कोठी डीआईसी की जाई परिबा सेठी सब तार फॉर्मेट सब मिलुची आमे आगुर सब डिस्कशन कले विषय रे ताको प्रथमे एप्लीकेशन करिबा तापरे तांको स्टाफ ठारू बुझिबा पई पडिबो कोन कोन मोर दरकार मो पाखरे एसेट किछि नाही मॉर्गेज दबा पई मते कोन करिबा पई पडिबो तापरे धीरे धीरे प्रोसीड करिबा पई पडिबो ये हेई नै जे अमेरिका ब्रिटेन बा फॉरेन कंट्री रो सरकार एटी बहुत बाट दे कि जिबा पई पडिबो ताहाले जणे सक्सेसफुल सेत पई कुआ जाइछबा वन एंटरप्रेन्योर टेक रिस्क बोल्ड स्टेप एंड रेस्पोंसिबिलिटी फॉर द बिजनेस बोल्ड स्टेप ताकू नबा पई पडिबो जेते प्रकार हडल्स आसुची ताकू से फेस करबा पई पडिबो नॉल से एंटरप्रेन्योर किमिति हबो आज्ञा जेतबेले फ्यूचर रे छोटिया बिजनेस टी विराट काय संस्था रे मिली जिवो सेठी तमे सेठी अपॉइंटमेंट दबो 50 टा लोक को दरकार पड़ले सेतबेले कि आनंद लागिवो मोर बिजनेस सेतबेले ग्रो करिथिबो मु 50 लोक को अपॉइंटमेंट दउथेबी माने जीविका निर्वाह करिबा पई पथ बटै दउथेबी सेतबेले केते खुशी लागिवो प्रथमे पूरा संघर्ष करिबा पड़िबो एंटरप्रेन्योर खाली बैंक को गले केही देबे नै बैंक रे के काई का पचारिबो सर जो लॉकडाउन टाइम रे गवर्नमेंट ये कलानी कि जो माने स्मॉल बिजनेस घरे रही के स्टार्ट करिया को चाहूछ से माननकु अति सुविधा रे लोन मिली जिवो एते टंका पर्यंत सर सबु से तो बैंक सब सुनो सबु अनुष्ठान गुडी का अवॉइड करंती मन रख प्रत्येक बैंक हो जे कोनसी अनुष्ठान हो अवॉइड करंती तेणु हमको जबरदस्त ता भीतर पछिबा पई पड़िबो सेइडा को कहंती बोल्ड स्टेप ना कोन अभिमनु हाँ सर एइगडा कहंती बोल्ड स्टेप जे सर कोन संघर्ष की करी चाली परला जेतेबेले बिजनेस टा मोर एक्सपांड हबो सेतेबेले केते आनंद पाइबा हमें हाँ 50 टा सर पिला बहुत को हमें कोचिंग देतेबा प्रचुर लाभ आज्ञा आसुथबो सेतेबेले कि आनंद पाइबा हमें हाँ सर केवल हमें हाँ बैंक सर रे पहुंची गले हमको लोन दे दियो एगडा के सुनिबे बुझि पारलो नागरिका आज्ञा सर सर स्टेप नबा बैंक पड़िबो को सर हमको बिजनेस तो स्टार्ट करिया को पड़ियो ना माने फास्ट तो जहाँ भी हेले गोटे स्टार्ट करिया को पड़ियो आगो को बड़ माने बड़ बिजनेस करिया पई सेति पई तो केही तो माने जोठी की भी गला को केही परमिशन दबा को राजी होउनांती ना ना एमिति हेई पारियोनी तमे एमिति करो सेमिति करो ये ए जिंसटा नाही माने तमे किछि करि पारियोनी आमे किछि करि परिबोनी से तो डायरेक्ट मना प्रथमे छ फास्टली नेगेटिव यू विल फेस ए सीरियस नेगेटिव बहुत नेगेटिव फेस करिया पड़िबो से नेगेटिव की जे हैंडल करि परला converted into positive environment he will be a successful man मु बा कहितली लीडर काहा कोंती लीडर काहा कोंती नेता काहा कोंती नेता लीडर is a successful man touches the heart of all the people and there are numbers of followers otherwise he will become a leader जने एंटरप्रेन्योर लीडर हे परिबो केते बेले तुमको से मना करूची दब नाही लोन
मु किभଳି लोन आनिबि मो लीडरशिप क्वालिटी मु शो करिबि मोर एटीट्यूड मोर डिग्निटी मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी एवं सबुआडे मते संघर्ष करी प्रथमरु प्रबल बेगर संघर्ष करिया पड़िबो आ थरे जदि लोन सैंक्शन हो गला सपोज 1 लाख सैंक्शन हो गला केमिति बुद्धि आसीबो चिंता कर सागरिका आगे बहुत माने माइंड पूरा ब्रॉड आप so I will put up here on my concept. yes sir thank you sir Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.